Hey guys, welcome to another vlog. अपने पास ये स्कॉडा रैपिड आई है फॉर रेस्टोरेशन पर्पस. राइट साइड से एक्सीडेंट हो गया था इसका, तो अभी वी आर गोना रिप्लेस द बम्पर, हेडलाइट, राइट साइड का फेंडर, वाइपर वॉशर बॉटल है. तो लेट्स सी हाउ इट गोस. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अभी सारे पार्ट्स आ गए हैं, तो फर्स्ट हम लोग फेंडर का अलाइनमेंट करेंगे. तो एज यू कैन सी फेंडर लगाया है, तो विल बी अलाइनिंग है. एंड दूसरा सबसे महंगा पार्ट इसका है हेडलाइट आया है. इसका 18,000 का तो हेडलैम्प ही है. तो फर्स्ट फेंडर और बम्पर लाइन करने के बाद फिर लाइट डाल के फिर चेक करेंगे. सो फेंडर अलाइनमेंट इज़ कम्प्लीट. अभी बम्पर एंड लाइट डाल के फाइनल अलाइनमेंट क्लियर है बिफोर पेंटिंग. सो व्हाट विल डू, एक अलाइनमेंट करके देन विल बी स्ट्रिपिंग द व्हीकल अगेन. The bumper would be taken out, the door would be taken out so that fender जगह पे पेंट हो जाए. तो let's see how it goes. अलाइनमेंट कंप्लीट हो गई इस गाड़ी की. तो दिस इज़ द फिनिश जो आएगा. सारी पैनल्स फिट करके इंटरनली लाइन जो चासी बैंड होता है इनका वो अलाइन करके ये हमने लुक फिनिश कर दिया है. सो नाउ विल बी पुटिंग द व्हीकल टू द पेंट बूथ. Prepping work is done for the fender and the bumper. So अभी बम्पर पे हम लोगों ने ऑलरेडी प्लास्टिक प्राइमर लगा दिया है एंड प्राइमर ऑलरेडी कोट चढ़ चुका है. सेम वी विल बी डूइंग विद द फेंडर एंड देन वी स्टार्ट आवर पेंटिंग प्रोसेस. सो पेंटिंग इज़ कम्प्लीट और नाउ फिटिंग इज़ इन प्रोग्रेस. मतलब आगे का ग्रिल हम लोग फिट कर रहे हैं. दोनों फॉग लैम्प्स एंड फॉग लैम्प्स का कवर अभी फिट करेंगे. तो इसके बाद विल बी टेकिंग द व्हीकल आउट ऑफ द पेंट बूथ एंड विल बी वॉशिंग एंड इट्स रेडी फॉर द डिलीवरी. सो गाइस, दिस इज़ द कंप्लीटेड लुक ऑफ द स्कॉडा रैपिड. जो पार्ट्स हमने चेंज किए वो हमने सामने रख दिए, लाइक बम्पर, आपका हेडलाइट एंड एवरीथिंग. सो होप यू गाइस लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.